Assalamu alaikum. Hi guys. So, आज I'm back with another book review for the subject of biochemistry. A lot of students are scared of this subject. जब MBBS में दाखला होता है तो एनाटमी तो बड़ी मुश्किल लगती है टिपिकली स्पीकिंग. बायोकेमिस्ट्री एक वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और फिजियोलॉजी आपको बायोलॉजी की याद दिलाती है. और वो आपका एक सेफ नीच होता है कि चलो दिस इज मेकिंग मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ. सो बायोकेमिस्ट्री से बड़े लोग भागते हैं. कुछ लोगों को उसका तुक समझ में नहीं आता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. हम कोई केमिस्ट हैं. थोड़ी सी मुश्किल भी लगती है इसमें. there's a lot of memorization involved. But biochemistry is important just like any other subject. It's really important. um, Once you know which books you're going to use, and once you get the hang of it, once you know all your resources, you have it figured out, तो फिर biochemistry इतनी बुरी भी नहीं है. It's useful. So biochemistry is the application of chemistry to the study of biological processes at the cellular and molecular level, which basically just means कि आपके cellular level के ऊपर जो जो chemical reactions हो रहे हैं that are keeping you alive, like DNA replication and translation, transcription. You've been through that. You've studied all that in FSC. तो यहाँ पे उसी की बड़ी elaborate किस्म की form हम पढ़ेंगे. Krebs cycle हो गया, glycolysis, all those cycles. So, in my opinion, my personal opinion, जो आपकी टीचर की प्रेजेंटेशंस हैं, जो क्लास के नोट्स हैं, वो आपकी बेस्ट लर्निंग एड है फॉर बायोकेमिस्ट्री. Pay a lot of attention to that, right? Get handouts of the slideshows and go through them, क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको वहीं से टेस्ट करना है बेसिकली. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके नोट्स A1 प्रिपेयर हुए हुए हैं. उसके बाद डेफिनेटली विल टॉक अबाउट बुक्स. सो बुक्स में, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, एक बड़ी बुक होती है, एक दरमियानी बुक होती है, एक छोटी बुक होती है, और एक होती है आपकी रिवीजन हाई यील्ड किस्म की बुक्स जो कि पोस्ट MBBS लेवल के लिए बनाई गई हैं, लेकिन आपको MBBS में भी हेल्प करती हैं. तो जो बायोकेमिस्ट्री की बड़ी बुक है या गोल्ड स्टैंडर्ड बुक कहा जा सकता है, दैट इज हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री. Now, this book is good, no doubt, but I feel कि it should be a reference book, not your main टेक्स्ट बुक. क्योंकि ऐसी बुक आप बार बार नहीं पढ़ सकते. आप हिम्मत करके, वक्त निकाल के, मोटिवेशन ला के एक दफ़ा उसको पढ़ भी लें तो ऐसी बुक्स रिवाइज नहीं हो पाती हैं. इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली वेरी हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन. हाई यील्ड पॉइंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउडिंग ऑफ लो यील्ड पॉइंट्स जिनका कोई अहमियत नहीं है. और फिर ये रिजल्ट होता है कि जब आप इतना कुछ रिटेन करने की कोशिश करते हैं तो आप यू विल फेल मिजरेबली. आपको कुछ याद नहीं रहेगा और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी. तो इस तरह की किताब को प्राइमरी टेक्स्ट बुक ना बनाएं. कोई चीज़ अगर आपको लगता है आपकी प्राइमरी टेक्स्ट बुक में डेफिशिएंट है, तो फिर यहाँ इसको खोल के कंसल्ट कर लें, रेफरेंस बुक लाइक आई सेड. तो MBBS लेवल के लिए इट्स टू मच. सो इवन इफ़ यू डोंट बाय इट दैट्स फाइन. हमारी क्लास में बड़े लोग थे जिन्होंने बुक नहीं ख़रीदी थी, और जहाँ पे हमें फील होता था कि इसकी ज़रूरत है, इसके वो प्रिंट आउट्स ले लेते थे 2-3 सफ़ों के. कहाँ 2-3 सफ़े हैं, कहाँ पूरी किताब है. तो इट्स अ गुड बुक. You can buy it, but you don't have to buy it. Okay, then we have Lippincott's Illustrated Reviews. This is amazing. बहुत अच्छी बुक है. इसको मैं कहूँगी कि इसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाएं आप. ये दरमियाना सा साइज़ है, टेक्स्ट अच्छा खासा है, अच्छे डायग्राम्स हैं इसके अंदर. इट्स स्टूडेंट फ्रेंडली, मज़े की बुक है, अच्छी लगती है. मतलब इतना बोझ नहीं लगता है इसको पढ़ना. आई थिंक रिटेन भी हो जाती है और एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है. इसमें क्लिनिकल सेक्शंस भी हैं, तो इट विल हेल्प यू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स. आपके जो क्लिनिकल सिनारियोज हैं उसका भी आपको कुछ आइडिया करा देती है. Then there's the BRS series, like I always mention in my videos. तो BRS सीरीज़ बायोकेमिस्ट्री की अगेन पहली दफ़ा खोलेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि BRS assumes कि आपका कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ है.
कॉन्सेप्ट बना के व्हेन यू इन द मूड टू टेस्ट योरसेल्फ एंड क्विज योरसेल्फ, तो यहाँ से तैयारी कर लें। इसको रीड करें, अच्छी किताब है। इसमें बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में हाई यील्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपकी रिवीजन अच्छी हो जाती है। कैप्लन इज़ अगेन अ सीरीज़ लाइक BRS। इसको भी मैं अपनी अक्सर वीडियोस में मेंशन करती हूँ। ये अच्छी बुक है। Again, it's not a primary book. It is designed for people who have already done their MBBS and now they're studying for further exams like USMLE. So it's not a primary book, but it's a good revision book. Then there's this book, Leninger Principles of Biochemistry. मैंने personally ये book नहीं पढ़ी, लेकिन I've heard about it and I've heard good things about it. It's a good book. Again, जिस तरह हार्पर का मैंने कहा था कि एक रेफरेंस टेक्स्ट के तौर पे यूज़ हो सकती है, सेम इसका भी यही है कि आप इसको एज अ रेफरेंस टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू बाय इट, एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. Okay, this is another book. It's really, really good. It's called Rapid Review Biochemistry. Rapid Review भी बहुत सारे subjects के मौजूद हैं. Biochemistry particularly बड़ी helpful है students के लिए, क्योंकि बच्चे confuse हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े cycle हैं, इतने बड़े बड़े table हैं, बंदा क्या क्या याद रखे. तो इसमें आपको जो एग्ज़ाम की जो टेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जो हाई यील्ड इंफॉर्मेशन है, जो कि बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इस तरह के पॉइंट्स इसमें यहाँ पे बड़े अच्छे दिए हुए हैं. क्लिनिकली रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है. तो आई सजेस्ट कि आप लिपिनकॉट को अपनी प्राइमरी बुक रखें और उसके साथ इसको यूज़ कर लें टू री इन्फोर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. Then there's the Made Ridiculously Simple series. This is just for fun. I just put it in there just for because I already had it. तो मेरे पास पड़ी थी, तो I thought to review it. बिल्कुल necessary नहीं है इसको खरीदना. Made Ridiculously Simple बड़ी अच्छी series है, especially for microbiology. जब मैं microbiology की वीडियो बनाऊंगी, I'll tell you all about it. Biochemistry वाली कोई इतनी impressive मुझे नहीं लगी. It's too complicated. और बस ठीक है, बहुत छोटी सी है, बिल्कुल इनफ नहीं है. इट्स लाइक funny comic book kind of thing. So if you're just interested, for just for the sake of reading some fun content, so this is what it is. Totally unnecessary to buy. Then there's pre-test series. ये भी मौजूद है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की. मैंने ली थी MBBS लेवल के लिए. लेना उतना ज़रूरी नहीं है. इसमें काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, अपने आप को आप क्विज कर सकते हैं. लेकिन आई फाउंड कि ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल थे. मेरे एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये उनसे बड़े बेसिक लेवल के थे. तो यू बेटर ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट पेपर्स जो आपने अपने सीनियर्स से लिए हैं, आपका कॉलेज जो प्रोवाइड करता है. आई थिंक दे विल help you more than such books. So yeah, that's it for biochemistry. If you liked this video and you want me to make more, please like, comment, share, and subscribe, and follow me on my social media. And I'll see you in the next one. Bye.